Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, ecosystem, and today I will deliver its third lecture. And the lecture is about the biotic and abiotic factors. Today we will only discuss about the biotic factors. So my dear students, first of all, let's have a look at the student learning outcomes. So by the end of today's lecture, all the students will be able to explain biotic factors like plants, animals and humans. So today we will only discuss about the biotic factors, जिनमें included है plants, animals or human beings. So my dear students, let's move forward towards recapping. Can you name some ecosystem present in Pakistan? Name any ecosystem. क्योंकि अब हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं ecosystem के बारे में, तो name some of the ecosystems present in Pakistan. River, pond, desert, forest, all of these ecosystems are present in Pakistan. Very good. So my dear students, next is brainstorming activity. I will ask a few questions or okay. So my dear students, what are the environmental features of a desert? आपको स्क्रीन पे भी एक डेजर्ट नजर आ रहा है, तो इसके environmental factors कैसे होते हैं? Extremely hot, dry, sandy. So these are the environmental factors or conditions of a desert. So my dear students, here is a desert, number A picture, and number A picture is of a forest. So quickly have a comparison between the two. It is dry, no vegetation. Dry होने की वजह से यहाँ पे कोई plants नहीं है. इसके अलावा बारिश बहुत कम होती है, इसकी वजह से भी यहाँ plants नहीं है. On the other hand, in the forest there is more vegetation, there are more plants because of more rainfall and the moderate climate. So आप ये देखें कि living things और non living things जो है वो कितने आपस में कनेक्ट करते हैं when we talk about an ecosystem. यानी कि एक डेजर्ट के इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स जो है वो बहुत कम है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, because of its environmental factors. And in the forest, whereas there is a huge population of animals living in the forest ecosystem because of its environmental conditions. तो आप ये देखें कि किस तरीके से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है, यानी कि environmental factors और जो survivors हैं वहां पर, वो किस तरह आपस में connected हैं. So my dear students, deserts have lesser rainfall as compared to forest. Deserts have relatively higher temperatures. Deserts have the least vegetation as compared to forest. तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ड्राई है, पानी बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर प्लांट्स विच आर लिविंग थिंग्स वो बहुत ही कम है. और प्लांट्स बहुत कम है, तो इसी वजह से जो एनिमल्स है वो भी डेजर्ट्स में बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं. So let's quickly move on towards the Islamic perspective. In the creation of the heavens and the earth and the alteration of night and day and the ships that run in the sea with that which benefits mankind and the water, Allah sends down from the sky, then gives life with it to the earth after its death and spreads it in all kinds of animals and the changing of the winds and the clouds and made subservient between heaven and earth. There are surely signs for a people who understand. So my dear students, अल्लाह ताला ने इतने सारे इकोसिस्टम्स अर्थ पे बनाए हैं. पानी अल्लाह ताला आसमान से बरसाता है, जिसकी वजह से जानवर, पौधे और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन पर उगती हैं. तो जो अकल रखते हैं, डेफिनेटली उनके लिए इन तमाम चीज़ों में निशानियां हैं. हमें अपने इर्द गिर्द चीज़ नज़र आने वाली बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें हमारे लिए निशानियां हैं कि हम अल्लाह ताला को पहचान सकें. So my dear students, component of an ecosystem, एक ecosystem के दो components होते हैं, biotic and abiotic. So bio means life, so living factors होते हैं, whereas abiotic means non-living factors होते हैं. So एक ecosystem को बनाने के लिए दो चीजें important हैं, वहां के
लिविंग थिंग्स और वहां की नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि उनकी एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये दोनों जो है मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। इनके दरमियान जो इंटरैक्शन है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। So my dear students, ecosystem, biotic factors and abiotic factors. So the biotic factors includes living things, और living things कितनी तरह के होते हैं? There are producers which are plants, and then comes the consumers. So consumers जो हैं वो भी तीन तरह के हैं. Primary consumers which are herbivores, then comes the secondary consumers which are carnivores यानी कि meat eating है, then comes the tertiary consumers, they are secondary carnivores यानी कि ये भी meat eating होते हैं, and then comes the decomposers. तो ये बायोटिक फैक्टर्स हैं यानी कि ये लिविंग थिंग्स हैं जो कि इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने सिर्फ बायोटिक फैक्टर को ही इंक्लूड किया है। सो बायोटिक फैक्टर्स, देयर आर प्रोड्यूसर्स, देन कम्स कंज्यूमर्स एंड देन कम्स डीकंपोजर्स। सो प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स एंड देन द कंज्यूमर्स आर प्राइमरी यानी कि सबसे पहले जो प्लांट्स को यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, उनको प्लांट ईटिंग कहते हैं, वो प्राइमरी हैं। प्राइमरी मीन सबसे पहले। एंड देन कम्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि कार्निवोर्स हैं, और ये किसको खाते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं यानी कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ गोट ईट्स प्लांट्स एंड देन द गोट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, एंड देन कम्स द सेकेंडरी कंज्यूमर विच इज अ लायन, और वो लायन जो है वो किसको खाएगा? प्लांट को तो नहीं खाएगा, डेफिनेटली इट विल ईट द गोट। सो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये दूसरी दफा जो है वो किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है। So my dear students, producers are plants, they make their own food and then plants को जो है वो animals खाते हैं। So animals, all the animals are the consumers, और फिर आगे हमने consumers को भी आगे divide कर दिया primary, secondary और tertiary में। And plants make their own food in the presence of sunlight, water, air and soil. So my dear students, consumers जो हैं these are animals। तो सबसे पहले जो है वो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खाते हैं जैसे कि गोट्स, एलिफेंट, जिराफ, एंड देन कम्स दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक गोट, कैमल, काउ एटसेट्रा, एंड देन कम्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स जो कि प्लांट ईटिंग भी होते हैं और मीट ईटिंग भी होते हैं। लायन जो है इट इज मीट ईटिंग कार्निवोर, कैट इट इज अ मीट ईटिंग, इट इज अ कार्निवोर, crow is also a carnivore, whereas hen is an omnivore. Omnivore means जो कि plants और animals दोनों को इकट्ठा कंज्यूम कर सकते हैं। So my dear students, decomposers हैं, ये भी बायोटिक फैक्टर है और ये भी इकोसिस्टम में इंक्लूडेड है। ये डिकम्पोज करते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स को। These are the bacteria, these are microscopic bacteria and fungi, they break down the bodies of dead matter। यानी कि कोई भी डेड एनिमल और प्लांट जो है when they become the part of the soil, तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये उनको कंज्यूम करते हैं, उनको खाते हैं। तो आप ये देखें कि सब जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन एन इकोसिस्टम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको एक फूड चेन नजर आ रही है जिसके अंदर जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं एक इकोसिस्टम के अंदर वो आपको सब नजर आ रहे हैं। यू कैन सी द प्लांट्स, दिस इज अ प्रोड्यूसर and it makes its own food, it is a living thing, it is a biotic factor। so ये जो snail है ये plants को खाता है, so it is a primary consumer, इसने सबसे पहले plant को खाया, it is taking food from the plant, so it is a primary consumer। now this owl is a secondary consumer, it will eat this snail and then the owl eats the hawk eats the owl। तो ये जो है ये tertiary means third consumer है। so plant जो है these are the producers, they make their own food। लेकिन 3 consumers जो हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? snail आ गया because it is consuming the plant।
So जो plant को consume करेगा, that is the primary consumer. Then comes the owl. It is consuming the snail, so it is the secondary consumer. Then third part में जो hawk है, it is eating on or feeding on the owl. So it is the third consumer, it is the tertiary consumer. Now my dear students, quickly open page number 28 in your science books. I hope everybody has opened the page. Now we will start the reading. Biotic and abiotic factors. Today we will only discuss about the biotic factors. Many factors influence the ecosystem in different ways. There are two kinds of factors, that is biotic factors and abiotic factors. Biotic factors. Biotic factors are all the living things in an ecosystem. They depend upon abiotic factors for survival and reproduction. They can be divided into the following three groups. So my dear students, before further reading, एक जो इकोसिस्टम है, मैंने आपको रिपीटेडली मैं ये बात बताती जा रही हूँ कि एक इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, और दोनों जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो उनके इंटरैक्शन से एक इकोसिस्टम जो है वो बनता है. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो एक इकोसिस्टम में रहते हैं, उनको एबायोटिक फैक्टर्स की यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स की, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल, एयर, इन सब की भी ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बायोटिक फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम. नंबर वन इज अ प्रोड्यूसर विच आर द प्लांट्स. हम अब बार बार पढ़ चुके हैं. ऑल प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर फूड not only for themselves but for all living beings. Consumers. All the animals consuming plants directly or indirectly are called as consumers. Example are goat, lion, cat, crow, etc. Decomposers. Decomposers are the bacteria and fungi mostly. They break down the dead bodies of plants and animals into valuable substances. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखें कितना थोड़ा सा टेक्स्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी है. सबसे पहले प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स है. व्हाई दे आर प्रोड्यूसर्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. दे कैन मेक देयर ओन फूड. ये बात आपने याद रखनी है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल. नॉन लिविंग फैक्टर्स भी यहां पर आ गए. इसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर बिकॉज दे हैव टू कंज्यूम समथिंग फॉर एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. तो जितने भी एनिमल्स हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमिंग द प्लांट्स. अब जैसे कि एक गोट है वो डायरेक्टली इट ईट्स फ्रॉम द प्लांट्स. अब एक लायन है वो भूखा है और वो गोट को खा लेगा, तो इसने इनडायरेक्टली प्लांट को कैसे खाया? बिकॉज द गोट इज सर्वाइविंग ऑन द प्लांट्स. तो इनडायरेक्टली ये भी प्लांट से कनेक्टेड है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली हम सभी प्लांट से कनेक्टेड है. वी नीड इट फॉर द फूड और फॉर द क्लीन एयर. सो जितने भी एनिमल्स हैं एंड ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल कंज्यूमर्स. देन कम्स द डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स मीन्स टू decompose the dead matter like plants, dead animals and plants. So the microorganisms like bacteria and fungi, they decompose the dead animals and plants. और ये उनको किस चीज में convert करते हैं? They convert them into useful material जो कि दोबारा जो है वो soil का हिस्सा बन जाता है और plants उसको consume करते हैं. Plants need the soil to grow. So my dear students, here is a forest ecosystem जहाँ पे आपको different जो है वो consumers और producers नजर आ रहे हैं. जितने भी plants हैं they are the producers and जितने भी animals हैं they are the consumers. अब consumers जो हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी होते हैं. सो यहाँ पे आपको टुकान बर्ड नजर आ रहा है, स्कैवेंजर्स नजर आ रहे हैं जो कि देन बाओ कंस्ट्रक्टर है, इसके अलावा स्क्विरल है, मकाओ बर्ड है, जैगवार है, टपीर है. ये जितने भी एनिमल्स हैं दीज आर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. चले लेट्स स्टडी अबाउट देम. एक दफा इसको गौर से देखते हैं. तो सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? जो प्लांट्स को खा रहा है. सो दिस बटरफ्लाई इज ईटिंग द प्लांट्स, taking the nectar from the plants. Then
the birds, they feed on the butterfly. Then these tapir, they feed on the birds, and then the jaguar feeds on the tapir, and snake eats the squirrel. So that's how these all animals are connected, and there are somehow all the consumers, primary, secondary and tertiary. जो सबसे पहले plants को consume करेगा, that is the primary, then which feeds on that animal is the secondary, and then the third, and इस तरीके से the cycle goes on. Now it's time for an activity. Divide class into groups and ask them to find out biotic and abiotic factors, and also explain category of biotic factors into 3 groups: producer, consumer and decomposer. Also done the activity, explain your finding factors. So my dear students, अब आप इजीली जो है अपने स्कूल गार्डन में जा सकते हैं, और आपको क्या एक्टिविटी करनी है, आपको वहाँ पे प्रोड्यूसर्स यू हैव टू फाइंड देम आउट, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द कंज्यूमर्स व्हिच आर अराउंड यू, एंड देन यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट द डीकम्पोजर्स. आपको बहुत सारे डेड लीव्स जो हैं वो अक्सर जो है वो नज़र आते हैं पड़े हुए, तो वेयर डू दे गो? They basically are decomposed by the decomposers, bacteria and fungi. So my dear students, आपको अपनी findings जो है इनको explain भी करना है कि why the plants are the, आपने किस किस चीज को किस कैटेगरी में रखा है, तो क्यों रखा है. Ask some questions like which is biotic and abiotic factor. ठीक है, अब आप बाद में जो है टीचर आपसे पूछेंगी कि कौन से बायोटिक फैक्टर्स हैं, कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं आपकी फाइंडिंग्स में. इज दिस बायोटिक फैक्टर इज अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. तो जो भी आप बायोटिक फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन योर गार्डन यू मे सी अ बर्ड, प्लांट्स, फ्लावर्स and butterflies and some insects. So you will write down their names and you will tell that these are all the biotic factors, whereas abiotic factors will be soil, air, sunlight, these are the water, these are the abiotic factors because they are non-living. तो अब आपकी टीचर आपसे ये बात पूछ सकती हैं, या मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि आपकी फाइंडिंग्स में abiotic factors में से कौन सी चीज़ें producers हैं, कौन सी consumers हैं और कौन सी decomposers हैं. So my dear students, quickly finish this task. And linkage of biotic factors with abiotic factors. So ecosystem, biotic factors and abiotic factors, they interact with each other, and that's how an ecosystem is formed. Here you can see different biotic and abiotic factors. आपको पानी नजर आ रहा है, इसके अलावा हवा है, mountains हैं, soil है, और बहुत सारे आपको producers और consumers, different animals नजर आ रहे हैं. So all these together make up an ecosystem when they interact. So their interaction basically is called an ecosystem. Plants, animals and decomposers, these are the biotic factors of an ecosystem. And the abiotic factors are sunlight, water, air and temperature. Now is the time for practice, my dear students. For practice, you can simply download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from BioTeacher. Let's have a look at the worksheet. I will explain it to you. So my dear students, the SLO is written here, and then observe the given picture carefully and answer the questions given at the end. आपको यहाँ पर एक picture दी गई है और आपको इसको carefully notice करना है, उसके बाद आपको answer करना है. Identify and enlist the living things in the ecosystem given in the picture. जो भी लिविंग थिंग्स इस इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, आपको उनके नेम जो है वो लिखने हैं. डू द एनिमल्स इन द पिक्चर्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स? हाउ? जो भी प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं, कैसे एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपको बताना है. डू एनी ऑफ द लिविंग थिंग्स नीड ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल? क्या इनमें से कोई जो लिविंग थिंग्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड किसी पे करते हैं यानी कि जिंदा रहने के लिए? सो इट इज़ वेरी ईजी. ऑब्वियसली यहाँ पे फिश आपको नजर आ रही हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट आपको स्मॉल इंसेक्ट्स नजर आ रहे हैं. तो ये सब जो है आपको इनके बारे में लिखना है और फिर कैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट दैट डाउन. पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द वर्कशीट. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards the homework. So quickly note down your homework. For homework, you will do section B.
Number 2, B and C question. Differentiate between producers and consumers, consumers and decomposers. Very easy. And section C, part 2. How do biotic components interact with abiotic components? So my dear students, कैसे biotic components जो हैं वो abiotic components के साथ interact करते हैं? First of all, producers and consumers में क्या difference है? Producers make their own food. They are the plants. Consumers cannot make their own food. They need or they may feed on plants or other animals, and all the animals are the consumers. And then comes consumers and decomposers. Consumers are the animals which feed on animals and other animals, whereas decomposers are the microorganisms like bacteria and fungi, and they decompose or they feed on dead animals and plants and turn them into beneficial products. So my dear students, then comes how biotic components depend on abiotic components. Very easy. By jitne bhi animals or plants hain, they need the abiotic factors in an ecosystem to survive. Isko aap in detail jo hai, is question ko jo hai wo aap likhenge, theek hai? So my dear students, today we discussed about an ecosystem consists of biotic and abiotic factors. Biotic factors are producers, plants, and consumers are animals, and decomposers are bacteria and fungi. The biotic factors depend upon abiotic factors for their survival and reproduction. So my dear students, I hope you have clearly understand this. Now we will move forward towards the next lesson. We will discuss about the abiotic components or abiotic factors of the ecosystem. बायोटिक हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एबायोटिक फैक्टर्स जो है उनको इन डिटेल पढ़ेंगे. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.